School, attention. School, stand it is. India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great grandmother of tradition. The most valuable and most artistic materials in the history of man are treasured up in our country. A very good morning to everyone present here. We, the students of class 11B, happily start today's assembly program. Prayer is talking to God Almighty, the creator of whole universe. So let us start our assembly with the presence of God. I welcome Advaidanan for prayer. School, attention. Get ready for the prayer. Prayer begins. तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना दया करना हमारी आत्मा में सुध सदा देना हमारे ध्यान में आओ प्रभु हमको में बस जाओ अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना बहा दो ज्ञान की गंगा दिलों में प्रेम का सागर हमें यहाँ से मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना हमारा धर्म हो सेवा हमारा कर्म हो सेवा सदा ईस्मान हो सेवा व सेवक जन बना देना वदन के वास दे जीना वदन के वास दे मरना वदन पर जान पिदा करना प्रभु हमको सिखा देना दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना दया करना हमारी आत्मा में सुख सदा देना ओम सहनौ भवतु सहनौ भुनस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा दिशार्वहै ओम शांति 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 School, stand it is. Reciting the pledge is not a compulsion, but a mark of patriotism towards the country. It is an action that symbolizes one's loyalty towards the nation and its people, and the feeling as a citizen one is proud to be part of this blessed country. And to make us aware of our duties towards our motherland, I call upon Dhruvin Sai to take over the pledge. School, attention. Get ready for the pledge. Pledge begins. India is my country, India is my country, and all Indians are and all Indians are my brothers and sisters. my brothers and sisters. I love my country, I love my country, and I am and I am proud of its proud of its rich and rich and varied heritage. varied heritage. I shall give I shall give respect to my parents, respect to my parents, teachers, teachers, and all elders, and all elders, and treat everyone and treat everyone
with courtesy with courtesy to my country to my country and to my people. and to my people. I pledge I pledge my devotion my devotion in their well-being in their well-being and prosperity alone. and prosperity alone That is my happiness. lies my happiness. Jai Hind. Jai Hind. Goal. Stand it is. Keep your thoughts positive because your thoughts become your words. Good and inspiring thought can spice up our day. Reading new thoughts in the morning work like fuel, which give you smiling and encouraging throughout the day. So, to inspire us with a positive and powerful thought, here comes Anaga Sujal. Good morning. Today's thought. The key to success is to focus on goals, not obstacles. When we try to achieve our goals, we have to go through a lot of obstacles. Obstacles are common, no matter how big or small your destination is. We have to overcome it to reach our goals. But during this journey, we start to concentrate on our obstacles, which becomes harder for us to achieve our goals. So just try only to focus on our goals. It is the only way through which you can reach your desired destination. I repeat my thought. The key to success is to focus on goals, not obstacles. Thank you. Past is a waste paper. Present is a newspaper. Future is a question paper. So read and write carefully, otherwise, life will be a tissue paper. We are all excited to know about the present updates from around the world. So let us lend our ears to listen to the news updates from Sania Pijimesh and Purvi Pal. First, the national news. A 6-year-old boy named Raja Anil Sriram from Andhra Pradesh has become the youngest Indian to bag the Microsoft Office Specialist certification. Himachal Pradesh University to set up high-tech classrooms. Indian scientists developed capsules to curb crop burning. International news. China opens first road rail transport link to Indian Ocean. Japan seeks fresh hike in military budget to counter China. Now some sports and state news by Sanya. Now some states news. No electricity, no mobile charging points in Wayanad tribal colony. Upshot of record SLC pass. Government to increase +1 seats by 20% in 7 districts. COVID in Kerala. Karnataka demands RT-PCR negative certificate from fully vaccinated travelers. And last in sports news. Prasidh Krishna added to Indian squad for 4th test. Rose replaces Williamson as top-ranked test batsman. Tokyo Paralympics. Kerala shooter Siddhartha Babu finishes 14th. Pramod Bhagat wins. Young Palak Kohli enjoys a tough day. That's all for today's news. Thank you and have a nice day. Every day is special and it's a gift. To make this gift today more special, here comes Anmaya Christie and Anmaria with a special item. जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का करे जतन। सुप्रभात। आज मैं अनमरिया और मेरी दोस्त अनमया आपके सामने हिमाचल प्रदेश और केरल के नदियां और जल जीवन मिशन के बारे में एक विशेष कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत है। पृथ्वी पर हर एक जीव के लिए जल का बहुत ही बड़ा महत्व है। जीने के लिए जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर किसी कारण जल समाप्त हो जाता है तो कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि सभी जीने के लिए जल का उपयोग करते हैं। नदियां से जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक स्वच्छ जल प्राप्त होता है। विज्ञापनों में केरल को ईश्वर का अपना घर कहा जाता है। यह कोई अत्युक्ति नहीं है। जिन कारणों से केरल विश्व भर में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना है, वे है उष्ण मौसम, समृद्ध वर्षा, सुंदर प्रकृति, जल की प्रचुरता, सघन वन, केरल की 44 नदियां जैसे पेरियार, भारतपुड़ा, पंबा, चालियार आदि, जिनमें 41 नदियां पश्चिम की ओर बहते हैं। 3 नदियां पूर्व की ओर बहते हैं, कबनी, भवानी और पंबा। जो नदियां पश्चिम की ओर बहते हैं वे या तो अरब सागर में या झीलों में या अन्य नदियों में जा मिलते हैं। तो आइए
अभी हम अनमया से हिमाचल प्रदेश की जल जीवन के बारे में सुनते हैं। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली 5 प्रमुख नदियों हैं, जो सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों को पानी प्रदान करती है। ये नदियां हैं सतलज, चिनाब, रवि, ब्यास, यमुना। जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन सभी परिवारों को घर में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना, जिन्हें पानी की कमी जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। केंद्र सरकार के इस मिशन के अंतर्गत अभी तक 50% परिवारों को जल जीवन मिशन से लाभान्वित किया गया है। 2024 तक देश के सभी जल आवश्यक परिवारों को पानी की सुविधा को उपलब्ध कराया जाएगा। तो आइए हमारा कक्षा के कुछ छात्रों द्वारा बनाए गए कुछ नारे देखते हैं। धन्यवाद। A new word is like a fresh seed sown on the ground of knowledge. We should keep our words positive because our words become our behavior. So, to polish our vocabulary with good words, I invite Vishnu Priya. Good morning. Today's new word, introspection. Spelling Introspectation. Meaning, introspection is the examining of your own thoughts, ideas, and feelings. Sentence, he had always had his moments of quiet introspection. Thank you. Mahatma Gandhi never compromised on cleanliness. He gave us freedom and we should give him a clean India. With these mounting words of Shri Narendra Modi, we conclude today's assembly program. This is me, Aarti Kepai, and my friend Anagha Antony on comparing and Rakesh on comment. Thank you and have a nice day. School, attention. Get ready for the national anthem. National anthem begins. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष मादे दादे तब जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे। School, disperse.